Hello friends, in last lecture we have discussed a few multiple choice questions based on first chapter functions. Now in this lecture we will discuss the definition, standard results and shortcuts of the second chapter derivatives, which is also known as rate of change. Before moving to actual definition of derivative, let us discuss one concept here, limit of a function. We take a sample. Suppose limit x tends to 2, x square minus 4 divided by x minus 2 is equal to how much? The meaning of this question is as x approaches to 2, it means as x goes to nearer to 2, the value of this function goes to how much? The value of this function tends to how much? Okay, this notation is for tends to or approaches to. मित्रांनो, या प्रश्नाचा अर्थ असा आहे की जसं x ची किंमत 2 च्या जवळ जातं तसं या फंक्शनची किंमत कुणाच्या जवळ जातं असं त्याचं मीनिंग आहे. ॲज x अप्रोचेस टू 2 द व्हॅल्यू ऑफ दिस अप्रोचेस टू हाऊ मच. ओके, सपोज वी मेक अ टेबल ऑफ x अँड दॅट फंक्शन. मित्रांनो, आपण एक टेबल तयार केलं x आणि त्या फंक्शनचं. x ची किंमत आपण 2 च्या जवळ घेऊन गेलो तर त्या फंक्शनची किंमत कोणाच्या जवळ जातं याचं एक टेबल तयार केलं. लुक हिअर, x टेंड्स टू 2 याचा अर्थ x ची किंमत 2 च्या जवळ. वी हॅव टेकन x ॲज 1.9 अँड देन वी हॅव कॅल्क्युलेटेड दिस वन ऑन कॅल्क्युलेटर. फॉर x इज इक्वल टू 1.9 दिस फंक्शन गिव्स यू 3.9 ॲज अ आन्सर. यू कॅन चेक इट ऑन द कॅल्क्युलेटर. नाउ सपोज वी हॅव टेकन x इज इक्वल टू 1.99. दिस फंक्शन गिव्स यू द व्हॅल्यू ॲज 3.99. Similarly, for x is equal to 1.99999, the value of this function goes to 3.99999, etc. Okay, it means as x is close to 2, then the value of this function goes to close to 4. This one is the meaning of that question. मित्रांनो, जर x ची किंमत तुम्ही 2 च्या अगदी जवळ घेऊन गेलात तर या फंक्शनची किंमत 4 च्या जवळ जातं असं त्याचं मीनिंग आहे. सो फ्रेंड्स, अगर x की कीमत क्लोज टू 2 जाता है तो इस फंक्शन की कीमत क्लोज टू 4 जाता है, ये इसका मीनिंग हुआ. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन. नाउ लेट्स मूव टू द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव. इफ f of x be any function of x, then its derivative is given by f dash x is equal to limit h tends to 0 function of x plus h minus function of x divided by h. So friends, this formula is also known as derivative by first principle. All the list of the standard results of derivatives can be obtained by this formula. या सूत्रांनी डेरिव्हेटिव्हचे सगळे फॉर्म्युले तयार केलेले आहेत. ओके, नाउ लेट्स सी फ्यू स्टँडर्ड नोटेशन्स ऑफ द डेरिव्हेटिव्हज. इफ y is equal to fx, then its derivative with respect to x is given by dy by dx. मित्रांनो, y चं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x लिहिताना dy by dx असं लिहायचं. y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लिखते समय dy by dx ऐसे लिखते हैं. इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय y dash और y1 also. Derivative of y is also denoted by y dash or y1 also. Okay, here are the samples of the derivatives. Suppose s be displacement and t be time, then change in displacement with respect to time, which is given by ds by dt, is equal to velocity. We all know that velocity is nothing but change in displacement with respect to time. If displacement is s, t is time, then ds by dt is equal to velocity. Further, change in velocity with respect to time इज नोन ॲज एक्सेलरेशन. आपल्याला माहिती आहे की एक्सेलरेशन याचा अर्थ वेगातला बदल, चेंज इन वेलोसिटी. ओके, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसे हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं. एंड इट इज गिवन बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt. It means a change in velocity with respect to time. And further there is one more sample. Change in charge q with respect to time is known as current. So friends, current का notation है I and it is given by change in charge with respect to time. It is equal to dq by dt. So these are few samples of derivatives.
Now let us see derivatives of some standard functions with the help of first principle, which is given by this formula. F dash x is equal to limit h tends to 0 function of x plus h minus function of x upon h. मित्रांनो, आता काही स्टँडर्ड फंक्शनचे आपण डेरिव्हेटिव्ह डेराइव करू आणि त्यानंतर एक चार्ट बनवून आपल्याला ते लर्न करायचं आहे. ओके, सो पहले हम लोग कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले तैयार करेंगे, उसके बाद उसका टेबल बनाएंगे. ओके, सो लेट अस टेक फर्स्ट सॅम्पल ॲज एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह काय असेल हे आपण पाहूया. सपोज कॉन्स्टंट इज गिवन बाय के, एफ एक्स इज इक्वल टू के. नाउ इट इम्प्लाइज दॅट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, यामध्ये एक्स दिसलं की एक्स प्लस एच ठेवायचं. या ठिकाणी एक्स दिसत नाही, त्यामुळं एक्सच्या जागी एक्स प्लस एच ठेवायचा प्रश्नच येत नाही, त्यामुळं के आहे तसं लायचं. तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू अगर के है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब यह है कि इसमें अगर एक्स दिख गया तो उसके सामने एक्स प्लस एच लिखने का है. तो यहाँ पे एक्स नहीं है, सो वी कीप इट एज इट इज के. नाउ वी पुट द फॉर्मूला हियर. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन एच. वैल्यूज पुटअप करा. इट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब है के माइनस एफ ऑफ एक्स का मतलब है कॉन्स्टेंट के and divided by h, and k minus k is given by 0. 0 upon anything gives you 0. So in this way we obtained a derivative of constant is equal to 0. मित्रांनो, तसंही कॉन्स्टंट मध्ये कधी बदल होत नसतो, त्यामुळे डेरिव्हेटिव्ह याचा अर्थ काय सांगितलं आपण, रेट ऑफ चेंज. द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्स्टंट इज गिवन बाय 0. सो दिस वन इज द प्रूफ ऑफ द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट इज इक्वल टू 0. नाउ लेट अस टेक द सेकंड सॅम्पल. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. आता एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येतं हे आपण पाहूया. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इट इम्प्लाइज दॅट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू रिप्लेस एक्स बाय एक्स प्लस एच. इट गिव्स यू एक्स प्लस एच. नाउ वी राइट द फॉर्म्युला हियर. फॉर्म्युला लिहिलं. इट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच मतलब कितना हुआ, एक्स की जगह एक्स प्लस एच, सो ये आएगा एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स बोले तो कितना है, एक्स है, x and whole thing divided by h. Now x and minus x get cancelled. H upon h gives you how much, 1. So in this way the derivative of x gives you 1. मित्रांनो, अशा प्रकारे x चं डेरिव्हेटिव्ह हे 1 आलं. डेरिव्हेटिव्ह of x is equal to 1. Now let us take the third sample here. fx is equal to suppose x square. आता x square चं डेरिव्हेटिव्ह काढूया. It implies that function of x plus h is equal to, we replace x by x plus h here. It comes x plus h bracket square. Okay, x दिसलं की त्या ठिकाणी x plus h ठेवल्यानंतर त्याची किंमत x plus h bracket square असं येतं. Now we have written the formula here. f dash x is equal to limit h tends to 0 वगैरह वगैरह. उसके बाद वैल्यूज पुटअप कीजिएगा. लिमिट h tends to 0 फंक्शन ऑफ x plus h बोले तो x plus h का स्क्वायर माइनस फंक्शन ऑफ x means what, x square. Here it is. And it is equal to limit h tends to 0. We expand this x plus h bracket square by a plus b bracket square, which is a square plus 2ab plus b square. So x plus h bracket square is given by x square plus 2xh plus h square, and minus as it is, x square as it is. Further x square आणि minus x square cancel होतं, and we take from these two terms h common. या दोघातून आपण h कॉमन घेतलं. इनसाइड द ब्रॅकेट रिमेनिंग टर्म इज 2x प्लस h. एक h कॉमन घेतल्यामुळं एक h ब्रॅकेटमध्ये राहतं, अँड होल थिंग डिवाइडेड बाय वी कीप दिस h ॲज इट इज. फर्दर h अँड h गेट कॅन्सल, हे दोन्ही कॅन्सल होतं, अँड इन द रिमेनिंग टर्म वी पुट डायरेक्टली h इज इक्वल टू 0 हियर. h टेंड्स टू 0 का मतलब h की कीमत 0 के नियर. ओके, so directly we put h is equal to 0 here. It comes 2x plus 0 means 2x. Okay, so in this way the derivative of x square gives you 2x. Okay, मित्रांनो, हे प्रूफ आहे x square चं डेरिव्हेटिव्ह 2x आल्याचं. Now let us discuss the fourth sum. fx is equal to x cube. मित्रांनो, आता x cube चं डेरिव्हेटिव्ह कसं काढायचं हे पहा. Suppose fx is equal to x cube, it implies that f of x plus h is equal to replace x by x plus h. It gives you x plus h bracket cube. इसके बाद फॉर्मूला लिखते हैं. f dash x is equal to the formula and values पुटअप करते हैं. लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x plus h का मतलब है x plus h ब्रॅकेट का क्यूब, इथं लिहिलेला आहे. फर्दर माइनस ॲज इट इज
fx means x cube. Here it is. Okay. Now we expand this x plus h bracket cube by a plus b bracket cube. Well, so it is given by x cube plus 3x square h plus 3x square plus h cube. मित्रांनो आपल्याला a plus b bracket cube माहित आहे. Look here. a plus b bracket cube is given by a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Okay. So with the help of this a plus b bracket cube, we have expanded here x plus h bracket cube as x cube plus 3x square h plus 3x h square plus h cube. Okay. Further, we keep this minus x cube as it is. So we cancel x cube and minus x cube. And from these three remaining terms, we take h common. इन तीनों में से h common निकालते हैं. So inside the bracket 3x square plus h square में से h common निकला है, तो यहाँ पे 3x बचेगा. उसके बाद प्लस h क्यूब मधून जर h common काढला असेल तर आपण इथं h square असं लिहू शकतो. ओके. So whole thing divided by h as it is. Well, so we cancel h and h here. In the remaining terms, we put it directly h is equal to 0. So यहाँ पे h है, यहाँ पे भी h है. So if we take directly h is equal to 0, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ये 3x square बचेगा. So in this way, f dash of x means derivative of this x cube is given by 3x square. मित्रांनो हे प्रूफ आहे x cube चं डेरिव्हेटिव्ह 3x square आल्याचं. ओके. Now let us take one more sample here. Suppose fx is equal to 1 upon x and we need to find the derivative of 1 upon x here. So first of all we find f of x plus h. मित्रांनो function of x plus h याचा अर्थ यामध्ये x च्या ठिकाणी x plus h ठेवलं. It comes 1 upon x plus h. Further we have written here definition of the derivative. f dash x is equal to definition लिखो, उसके बाद values put up करो. Limit h tends to 0. f of x plus h का मतलब कितना था 1 upon x plus h, यहाँ पे लिखा है माइनस f of x मतलब कितना है 1 upon x, यहाँ पे लिखा है होल थिंग डिवाइडेड बाय h, यहाँ पे लिखा है बाय h. ओके. नाउ लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई हियर. 1 into x मतलब x, minus 1 into x means minus x, minus 1 into h means minus h, whole thing divided by x into x plus h, x into x plus h. We keep this by h as it is. Now उसके बाद x and minus x will get cancel. x and minus x cancel होतं. Minus h is in the numerator and whole thing divided by हे जे h आहे ना, हे h पण इथं खाली लिहिलं तर चालतं. We have written here h in the denominator. Okay. h into x plus h. All the three terms will be in the denominator. At the numerator minus h is present. So we cancel h and h from both numerator as well as denominator. In the remaining terms, look here, remaining term is minus 1 divided by x into x plus h and the limit is for h tends to 0. इसका मतलब है h की कीमत 0 रखो. तो यहाँ पे मैंने minus 1 divided by, we have taken x is equal to 0 here. So final answer will be minus 1 upon x into x plus 0. It means it is equal to minus 1 upon x into x means x square. So in this way, this one is the proof of 1 upon x का जो डेरिवेटिव है वो आता है minus 1 upon x square. Well, now let's see a table of standard rules of the derivatives including shortcuts. Okay, shortcut सकट आपल्याला हे टेबल पाहायचं आहे आणि लक्षात पण ठेवायचं आहे. एक तरफ फंक्शन और दूसरी तरफ उसका डेरिवेटिव का टेबल हम लोग देखने वाले हैं. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, अभी अभी हमने प्रूफ भी देखा था. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1. kx का डेरिवेटिव k. इफ k इज कॉन्स्टंट देन kx चं डेरिवेटिव k असतं. सॅम्पल 3x का डेरिवेटिव 3, 4x का डेरिवेटिव 4, लाइक दिस. x by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2, माइनस 5x by 4 का डेरिवेटिव माइनस 5 by 4 वगैरह वगैरह. वेल, इन जनरल kx का डेरिवेटिव k, कॉन्स्टेंट इंटू x का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट. उसके बाद एक्स स्क्वेअर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वेअरचा डेरिवेटिव 2x. यानंतर लुक एट दिस वन, स्टार स्क्वायर. स्टार मतलब कोई भी एक फंक्शन, तो उसका स्क्वायर अगर रहता है तो उसका डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं 2 स्टार इनटू स्टार डैश. सो फ्रेंड्स, स्टार मीन्स एनी फंक्शन and star dash means the derivative of star.
If the term is like this star square, then its derivative is given by 2 star into star dash. While finding the derivatives of composite function, we need to follow all these the star वाले rules. Okay मित्रांनो, आपल्याला हे सगळे स्टार वाल्या रूलचा वापर करायचा आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन मध्ये. वेल, सो स्टार स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 स्टार इंटू स्टार डैश. उसके बाद एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, तो स्टार क्यूब का डेरिवेटिव बनता है 3 स्टार स्क्वायर इंटू स्टार डैश. आई रिपीट, स्टार मतलब कोई भी एक फंक्शन, तो स्टार क्यूब का डेरिवेटिव 3 स्टार स्क्वायर इंटू स्टार डैश ऐसे लिखते हैं. स्टार डैश मतलब स्टार का डेरिवेटिव. एग्जाम्पल लेते समय ये सारी चीजें क्लिअर हो जाएंगी. ओके मित्रांनो, या सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला प्रूफ वगैरे काय पाहायचं नाहीये, काही ठराविक गोष्टींचं प्रूफ आपण पाहिलेलं आहे. वेल, आता हे सगळे रूल्स आपण ॲज इट इज ॲज अ स्टँडर्ड रूल्स म्हणून लक्षात ठेवायचेत आणि पाठ करायचेत. x⁴चं डेरिव्हेटिव्ह 4x³ आहे. x⁵चं डेरिव्हेटिव्ह 5 इंटू x⁴ येतं. इन जनरल x⁻n चं डेरिव्हेटिव्ह n इंटू x⁻n-1 असं येतं. x⁻100चं डेरिव्हेटिव्ह 100 इंटू x⁻100-1 विच इज 99 यानुसार लाईज असतं. वेल, सो दिस वन इज द शॉर्टकट. स्टार रेस टू n इसका डेरिवेटिव n इंटू स्टार रेस टू n-1 इंटू स्टार डैश ऐसे लिखते हैं. एग्जाम्पल लेते समय हम लोगों को ये सारी चीजें मालूम पड़ेगी. ओके, फर्दर 1/x⁸ चं डेरिवेटिव कसं काढायचं पहा. 1/x⁸ can be written as with the laws of indices. It can be written as x⁻⁻8. Now it can be comparable with x⁻n. If its derivative is n into x⁻n-1, then x⁻⁻8 का डेरिवेटिव कैसा आएगा? -8 into x⁻⁻8-1 विच गिव्स यू -9. ठीक आहे मित्रांनो, n ची किंमत जर -8 असेल ना, तर -8-1 का मतलब कितना आता है? -9. असं त्याचं उत्तर लिहायचं. फर्दर लेट अस सी वन मोर सैंपल हियर. 1/x², बोले तो कितना? x⁻². इसका डेरिवेटिव n इंटू x⁻n-1 के हिसाब से -2 इंटू x⁻2-1 मतलब -3. ओके, फर्दर 1/x चं डेरिवेटिव्ह असतं -1/x². आताच आपण प्रूफ पण पाहिलेला आहे. 1/x का डेरिवेटिव -1/x², तो 1/* का डेरिवेटिव -1/*² इंटू स्टार डैश. उसके बाद log x का डेरिवेटिव आता है 1/x, तो log स्टार का डेरिवेटिव लिखते हैं 1/* इंटू स्टार डैश. You have to remember all these standard results with shortcuts. Okay, e⁻x चं डेरिवेटिव e⁻x असतं मित्रांनो. e⁻kx चं डेरिवेटिव e⁻kx इंटू k असं असतं. सॅम्पल e⁻3x चं डेरिवेटिव e⁻3x इंटू 3, e⁻−x चं डेरिवेटिव e⁻−x इंटू -1, e⁻4x चं डेरिवेटिव e⁻4x इंटू 4 like this. Further, this one is the shortcut. e⁻* चं डेरिवेटिव e⁻* into star dash. Now a⁻x चं डेरिवेटिव it is given by a⁻x into log a. Sample 4⁻x चं डेरिवेटिव 4⁻x into log 4, 2⁻x चं डेरिवेटिव 2⁻x into log 2. a म्हणजे नंबर असतं, कॉन्स्टंट असतं. उसके बाद a⁻kx का डेरिवेटिव a⁻kx into log a into k. So all these are standard results. Now the next one, √x चं डेरिवेटिव 1/√x, तो रूट स्टार का डेरिवेटिव 1/√* into star dash. So these are the algebraic functions. Now trigonometric. sin x चं डेरिवेटिव cos x असतं. sin x का डेरिवेटिव cos x. sin kx का डेरिवेटिव cos kx into k. सैंपल देखिए, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x into 2 यानुसार लिहायचं असतं. उसके बाद शॉर्टकट sin स्टार का डेरिवेटिव cos स्टार इंटू स्टार डैश. वेल, साइन स्टारचं डेरिवेटिव यानुसार लक्षात ठेवा, cos स्टार इंटू स्टार डैश. ऐसा आप लोग ध्यान में रखिए. फर्दर cos x चं डेरिवेटिव -sin x, तो cos kx का डेरिवेटिव आता है -sin kx इंटू k. सॅम्पल पहा, cos 4x चं डेरिवेटिव इट इज -sin 4x इंटू 4 लाईक दिस. ओके मित्रांनो, यापैकी आपण सगळ्याच गोष्टींचं प्रूफ पाहिलेलं नाहीये. आपण काही मोजक्याच एक्झाम्पल्सचे प्रूफ पाहिलेलो आहे. ओके, बाकी हे जे सगळे रूल्स आहेत ना, आपल्याला ॲज इट इज लक्षात ठेवावे लागतील. cos स्टार का डेरिवेटिव -sin स्टार इंटू स्टार डॅश. नाव tan x चं डेरिवेटिव असतं sec2x, tan kx का डेरिवेटिव sec2kx इंटू k.
यह है शॉर्टकट tan स्टार का डेरिवेटिव sec स्क्वायर स्टार इंटू स्टार डैश। फर्दर cot x का डेरिवेटिव है माइनस cosec स्क्वायर एक्स, cot kx का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर kx इंटू के, शॉर्टकट cos स्टार का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर स्टार इंटू स्टार डैश। फर्दर sec x चा डेरिवेटिव पहा, इट इज sec x tan x, sec kx का डेरिवेटिव sec kx इंटू tan kx इंटू के असं असतं। फर्दर sec स्टार का डेरिवेटिव sec स्टार tan स्टार इंटू स्टार डैश यानुसार लिहायचं। फर्दर cosec x का डेरिवेटिव वो आता है माइनस cosec x इंटू cot x, उसके बाद cosec kx का डेरिवेटिव आता है माइनस cosec kx इंटू cot kx इंटू k, वेर k इज कॉन्स्टेंट। दिस वन इज द शॉर्टकट हियर, cosec स्टार का डेरिवेटिव माइनस cosec स्टार इंटू cot स्टार इंटू स्टार डैश। सो फ्रेंड्स, आप लोग ये सारे फॉर्मूलेज वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ओके, नाउ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलीज, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स स्टार का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस स्टार स्क्वायर इंटू स्टार डैश, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सिंपली द साइन चेंजेस -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, and the derivative of cos inverse star is given by -1/√1 minus star square into star dash। उसके बाद tan inverse x का डेरिवेटिव आता है 1/1 plus x square। दिस इज द शॉर्टकट, tan inverse star का डेरिवेटिव 1/1 plus star square into star dash। नेक्स्ट वन, cot inverse x डेरिवेटिव ओनली साइन चेंजेस -1/1 plus x square, derivative of cot inverse star is given by -1/1 plus star square into star dash। Now sec inverse x का डेरिवेटिव 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, sec इनवर्स स्टार का डेरिवेटिव 1/ स्टार अंडर रूट स्टार स्क्वायर माइनस 1 इंटू स्टार डैश, कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव सिंपली साइन चेंजेस -1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद दिस वन इज द शॉर्टकट, कोसेक इनवर्स स्टार का डेरिवेटिव -1/ स्टार अंडर रूट स्टार स्क्वायर माइनस 1 इंटू स्टार डैश। So friends, these are the standard results of the derivatives. So you have to remember all these standard results. Well, now in the next lecture, we will see examples based on the standard rules. Thank you.